Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to YourPedia Education. So the GATE exam is very close now. You have less than let's say 20 days if you are preparing for environmental sciences and civil engineering. So approximately 20 days hai, and we need to utilize this time. दिन में आप लोग पढ़ाई करें and in the evening when you come आप videos देखें जिसके अंदर 5 most important questions है from my side for environmental sciences. Now, these 5 questions basically cover from the entire syllabus itself. The questions can be like varying questions are certain. The first question can be from air and noise pollution. The second can be from microbiology. The third can be from chemistry. Fourth can be from this environment and fluid mechanics. It covers everything. Okay. So this type of practice you need to do daily. Just do five questions a day. Okay. In 20 days, you'll be covering approximately 100 questions, good questions. Okay. And very soon, we are also starting off with 100 most important questions for soil mechanics on this Sunday itself. So please come to that session. That session will be extremely long, approximately 5 or to 6 hours. So that will really help. Okay. So basically, we are here to start off these questions for GATE 2022. So let me give you a brief introduction from my end, and then just we'll start off with our preparation. So this is our first question. As you can see, if you can read, this is the first question. If it is not visible, let me just take it a bit down. Okay. I guess now it should be visible. All right. So this is a very good question. The first question, what is there in it? इसमें हमें दिया है a rectangular sedimentation tank following coagulation flocculation is to treat a flow of 8,000 meter cube per day. यानी यहाँ पे हमें discharge कितना दिया है? The discharge is 8,000 meter cube per day. Okay. The suspended solid concentration of water reduced from, ध्यान से देखें इसको, 250 milligrams per liter to 40 milligrams per liter by coagulation flocculation process. यानी कि अगर ये coagulation flocculation हो रहा है इसमें, जब discharge आया तो इसके अंदर कुछ था 250 milligrams per liter और बाद में जब निकला है तब कितना है 40 मिलीग्राम पर लीटर. यानी कि इसमें नीचे कितना सेटल हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नीचे कितना सेटल हो जाएगा 210 मिलीग्राम पर लीटर इन स्लज. स्लज में 210 मिलीग्राम पर लीटर इतना सेटल हो जाएगा स्लज में. द स्लज हैज अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 80%. ये जो स्लज है इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है 80% है. And the specific gravity of sludge is 1.2. The specific gravity of sludge is 1.2. इसको थोड़ा सा, it is not kg per meter cube, wrongly written है. Okay. The volume of the settled sludge in sedimentation tank. इस टैंक में settled sludge कितना है, उसका वॉल्यूम क्या है, हमें वो बताना है. Okay. तो इस sludge का वॉल्यूम बताने के लिए what we can do? देखो यहां पे दिया है we have 80% moisture content. 80% moisture content का मतलब क्या है, if the moisture content is 80%, that means solid content कितना है 20%. 20% is the solid content. but उसको फॉलो अप करने से पहले इसको समझें. इस स्लज में 210 milligrams per liter solids present है. 210 milligrams per liter solids present है. अब देखो 1 लीटर में 210 milligrams है, तो इतने सारे डिस्चार्ज में कितना होगा, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा. ओके, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. देखो in 1 liter the solids are 210
मिलीग्राम्स। ओके, सॉलिड्स कितने 210 मिलीग्राम से, तो 8000 मीटर क्यूब का में कितने होंगे? देखो 8000 मीटर क्यूब पर डे, ये किसके बराबर हो जाएगा? 8000 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। एक दिन में इतना सारा पानी आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल सॉलिड कंटेंट अगर हम लिखें, टोटल सॉलिड्स, तो ये कितना आएगा? 210 इंटू 10⁻⁻⁶, मैंने लिख लिया केजी पर लीटर। सिंस मिलीग्राम्स बहुत छोटा यूनिट है, तो आई हैव कन्वर्टेड इनटू केजी पर लीटर इंटू 8000 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। Okay, so liter से liter cancel, this and this will cancel, this will give 210 into 8000 kg per day. 210 into 8000 kg per day. इसको slightly solve करूं मैं अगर, so this will give 1.68 into 10⁶ kg per day. This is टोटल सॉलिड। ओके, ये हमारे लिए क्या है? टोटल सॉलिड है। अब देखो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम बताना है। अब इस वॉल्यूम, इस टोटल स्लज में हमें बताया गया है 80% पानी है और 20% सॉलिड्स है। यानी क्या हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 20% solids plus 80% water is equal to 100% sludge। यही होगा, करेक्ट? इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। कैन आई राइट 20 kg solid plus 80 kg water equal to 100 kg sludge? ओके, 100 kg sludge। तो देखो हर 20 kg के लिए, हर 20 kg के लिए हमें 80 kg वाटर चाहिए। ओके, 80 kg वाटर चाहिए। इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पूरे एक्सप्रेशन को इफ आई डिवाइड बाय 20, लेट मी डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 20, तो क्या आ जाएगा? फॉर 1 kg सॉलिड आई नीड 4 kg water to produce 5 kg sludge. Now this is the whole and sole equation of your question. Entire question का most important equation है ये। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर 1 kg सॉलिड है, फॉर 1 kg सॉलिड 5 किलो स्लज बनाएगा। 1 kg सॉलिड विल प्रोड्यूस 5 kg ऑफ स्लज। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 kg सॉलिड वी आर जनरेटिंग 5 kg स्लज, फ्रॉम 1.68 into 10⁶ kg solid we will generate 5 into 1.68 into 10⁶ kg of sludge। ओके, और ये स्लज का वैल्यू कितना आएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूं, this will be 8.4 into 10⁶ kg sludge। ओके, हमारे पास टोटल स्लज का वेट आ गया 8.4 into 10⁶ kg। ओके, 8.4 into 10⁶ kg। ओवरऑल वेट ऑफ स्लज अगर मेरे पास में है, लेट मी राइट ओवर हियर, द वेट ऑफ द स्लज, ओवरऑल वेट ऑफ स्लज हमें मिला है 8.4 into 10⁶ kg ऑफ स्लज। और अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.2, specific gravity is given as 1.2, so that means the density will be 1200 kg per meter cube, 1200 kg per meter cube। ओके, तो यहां पे क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1200, that is equal to mass is 8.4 into 10⁶ divided by volume। हमें वॉल्यूम ही निकालना है।
8.4 into 10 to the power 6 divided by 1200. This volume will come out to be 7000 meter cube per day. 7,000 meter cube per day. So the answer to this question is 7,000 meter cube per day. Okay. The answer to this question is 7,000 meter cube per day. Entirely इस तरह के क्वेश्चन गेट में इन रिसेंट इयर्स काफी बार पूछे गए हैं. तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें किसी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं लगता है. गेट का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका दैट हैज चेंज्ड. पहले फॉर्मूले बेस्ड आते थे, अब बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड नहीं, टोटली इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ओके, so you can just see it over here. The answer to this question is 7,000 meter cube per day. Okay, all right, next आ जाते हैं. So this is our next question. Let me just थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. Okay, concentrations for Na plus, Mg2 plus, Ca2 plus, Al3 plus, HCO3 minus, Cl minus are given. The pH of this water is 7, which indicates that it is neutral. Find total hardness, alkalinity and carbonate hardness as CaCO3. Please try it out. If I write here, the concentration of Na plus is 56 milligrams per liter, Mg2 plus is 30 milligrams per liter, Ca2 plus का जो concentration है that is 40 milligrams per liter, Al3 plus is 3 milligrams per liter, and then HCO3 minus, this is equal to 190 milligrams per liter, and finally Cl minus ion हमें दिया है 165 milligrams per liter. आपको तीनों चीजें बतानी है इसमें. You have to tell what is the hardness, what is alkalinity, and what is carbonate hardness. ये तीन चीजें बतानी है. तो देखो, first of all, let us calculate what is the total hardness. What is the total hardness? Basically, जो भी total hardness होता है, that is because of concentration of multivalent cations. किसकी वजह से होता है? It is because of concentration of multivalent cations. Okay, multivalent cations. अब total hardness किसके बराबर है? Multivalent cations कौन कौन से हमारे पास में? We have magnesium, concentration of Mg2 plus divided by equivalent weight plus concentration of Ca2 plus divided by equivalent weight, plus we also have concentration of Al3 plus divided by equivalent weight. Okay. Now since हमें ये चाहिए in terms of CaCO3, so we'll multiply it to equivalent weight of CaCO3. Okay, equivalent weight of CaCO3. Now let me tell you in very brief what is going to be the equivalent weight. Equivalent weight क्या होता है? Molecular weight divided by valency factor. Okay, this X is valency factor. X is what? Valency factor. तो यहाँ पे total hardness अगर हमें निकालना है as
CaCO3. So let me write the concentration of Mg2 plus, this is 30 divided by equivalent weight. अब equivalent weight हमेशा याद रखेंगे, this is 24 divided by 2 for magnesium, plus for calcium it is 40, so it will be 40 divided by 2, plus Al3 plus is given as 3 milligrams per liter, this is 27 divided by 3 into equivalent weight of CaCO3, this is 100 divided by 2, that means 50. Okay, this is equal to 50. So जैसे इस expression को I solve, I will get total hardness as, please try and solve it. This is 2.5 plus 2 plus into 50. Two 41.66 milligrams per liter. Okay, total hardness कितना आ रहा है? 241.66 milligrams per liter. ओके, अब आपका आंसर इसलिए भी मैच नहीं हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि क्वेश्चन में इट हैज नॉट कंसीडर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस एल्यूमिनियम, बट एनीवे इट इज फाइन, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है. तो टोटल हार्डनेस हमारे लिए कितना है? 241.66. नेक्स्ट, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द एल्कलाइनिटी. सेकेंडली वी विल कैलकुलेट हियर what is the alkalinity. So alkalinity किसके कारण होता है? HCO3 minus divided by equivalent weight of HCO3 plus OH minus divided by equivalent weight of OH minus plus CO3 minus divided by equivalent weight, this into 50, since we want to calculate it in terms of CaCO3. ओके, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन देखते जाएंगे और इसे सॉल्व करते हैं. एल्कलाइनिटी एज CaCO3. देखो यहाँ पे HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 190 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट HCO3 माइनस का कितना है? 61 डिवाइड बाय 1. ओके, 61 डिवाइड बाय 1. अब यहाँ पे OH माइनस, देखो ध्यान से देखना, हियर pH इज गिवन एज 7. क्वेश्चन में देखो pH गिवन है, इसको पुल डाउन करूं नीचे की तरफ में, तो द pH फॉर वाटर इज गिवन एज 7. लेट मी जस्ट place it up here. Okay, so here pH is given as 7, that indicates the value of pH is also 7. अगर pH का वैल्यू आपके पास में 7 है, so we can calculate the concentration of OH minus, that is 10 to the power minus 7 moles per liter. Okay, 10 to the power minus 7 moles per liter. So from here, अगर मुझे moles पता है, can I calculate the mass in milligrams? It is very simple. Moles is equal to mass upon molar mass. If the number of moles is 10 to the power minus 7, let's calculate mass. Molar mass for OH minus is 16 plus 1. So the mass is 17 into 10 to the power minus 7 grams. Okay, ये जो mass calculate होता है, this is always in the term of grams only. अब grams per liter है, per liter की बात चल रही है, तो let us make it per liter. और अगर मैं इसको milligrams में कर दूं, into 10 to the power 3 milligrams per liter, तो यहां से आपको OH minus का जो concentration आएगा, that will come out to be 17 into 10 to the power minus 4 milligrams per liter. 17 into 10 to the power minus 4 milligrams per liter.
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 into 10⁻⁻4 divided by 70, okay, into 50. This itself will give me alkalinity. Okay, from here हमें मिल जाएगा what is the alkalinity. Okay, please make sure कि आप इस एक्सप्रेशन को भी नोट डाउन करें. Okay, this is important. One 155.74 milligrams per liter as CaCO3. Okay, it is as CaCO3. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं? हमारे पास टोटल हार्डनेस आया है. The value of total hardness is 241.66 milligrams per liter. The value of alkalinity is 155.74 milligrams per liter. And also you should know that the carbonate hardness is the minimum of total hardness and alkalinity. इन दोनों का जो मिनिमम होता है. ओके, जो भी मिनिमम होता है. So at this point the minimum is alkalinity. So carbonate hardness is also equal to 155.74 milligrams per liter. अब इनको हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ में मैच करना है. ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ में मैच करना है. देखो यहाँ पे फाइंड द टोटल हार्डनेस. अब देखो टोटल हार्डनेस सबसे करीब कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए, बिल्कुल ही गलत हो गए, क्योंकि ये तो 650 एंड 650 है. सो दिस कैन नॉट बी आंसर. ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से वी कैन सी हियर ये टोटल हार्डनेस हमें दिया है 225 और एक 270. तो हमारा मोस्ट क्लोज कौन सा है? 241 जो है, इट इज मोर क्लोजर टू 225. ओके, इट इज मोर क्लोजर टू 225. अब आपका ये लॉजिक भी बैठेगा कि अगर ये हमारे लिए टोटल हार्डनेस है एंड ये एल्कलाइनिटी है, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? इन दोनों का मिनिमम जो कि 225 है. सिंस हमारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं और ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग, तो हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी. ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी. एल्स नहीं तो दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन फॉर योर गेट एग्जाम. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिनका ऑप्शंस मैच नहीं करते. सो दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपका कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. ओके, एनीवे अगर आपको फिर भी टिक करना है तो यू विल बी टेकिंग ऑप्शन बी, सिंस ये हमारे इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है. दिस वन. ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो कीप इन माइंड दिस थिंग आल्सो. चलिए, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट मी जस्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. So the question is given as at a hydraulic jump in a rectangular channel, the depth of the two sides are 0.4 meter and 1.4 meter. यानी y1 हमें दिया है 0.4 मीटर एंड y2 हमें दिया है 1.4 मीटर फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल. इसको जरूर पढ़ें. फॉर a rectangular channel.
ठीक है, इस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमें बताना है व्हाट इज द हेड लॉस। ये किसके बराबर होता है? सिंपल सा, y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स y1। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन को लगाएं, वील गेट द आंसर। y2 इज 1.4 माइनस 0.4 का होल क्यूब divided by 4 times 1.4 into 0.4. This is 0.446 meter, which is very much close to 0.45 meter. Okay, it is very close to 0.45 meter. So the answer is option D. Next पे आते हैं। If it is not visible, let me just go to this on the magnifier and yes. Now the question must be visible. Please try it out, guys. This is a question from dimensional analysis और एग्जैक्टली गेट के लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल गेट के लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई करें इसको प्लीज, बिल्कुल ही गेट के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, इन अ मॉडल स्टडी इफ द लेंथ रेशियो इज 1/40। ओके, लेंथ रेशियो दिया है 1/40, यहां पे लिख लेते हैं लेंथ रेशियो इज 1/40 and the velocity ratio is 1/10. Velocity ratio कितना है? 1/10. Then what is the discharge in the model required for a design discharge of 10,000 meter cube per second in the prototype? Okay, यानी कि discharge in the prototype is 10,000 meter cube per second. हमें बताना है what is the discharge in the model. हमें ये बताना है। Okay, what will be the discharge in the model? हमें ये बताना है। No, D is not the answer. D आंसर नहीं है। अब इसके अंदर आपको देखो कन्वेंशनली वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा कि आप पढ़ते हैं, फ्रॉड नंबर वाला जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो उससे नहीं होगा। सिंपल सा इसको समझे, डिस्चार्ज किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी। सो आई कैन राइट हियर, अगर मैं रेशियो लिख रहा हूं तो दिस एरिया कैन बी रिटन एज LR का स्क्वायर इनटू VR। ओके, एरिया है, डायमेंशनली इक्वल कर रहे हैं ना, डायमेंशनली इक्वल कर रहे हैं तो दैट विल गिव LR स्क्वायर। Can we write it like this? Discharge in model upon discharge in prototype, this is equal to 1/40 का whole square into 1/1/10. Velocity ratio 1/10 है। Discharge in model हमें निकालना है। Discharge in prototype is 10,000 1/40 square into 1/10. तो यहां से please find what is the discharge in model now. What is the discharge in model? If you solve it, it will come out to be 0.625 meter cube per second. This will come out to be 0.625 meter cube per second. The answer is option C, 0.625 meter cube per second. Okay. Yet another question, good question from fluid mechanics. Next आते हैं,
This question is from hydrology. Please try it out. Okay. देखिए यहाँ पे. So we are given with data like the average annual rainfall at station A, B and C है. तो यहाँ पर डेटा लिखते हैं. Average annual rainfall is divided by NA. NB per it is 180 centimeter and NC पे it is 200 centimeter. Okay. Next year in 1990 the station B became inoperative. Station B inoperative हो गया किसी एक साल में and the station A and C recorded annual rainfall of 170 and 180 respectively. This is 170 centimeter. Rainfall at B is not known. 180 centimeter. हमें क्या बताना है? The annual rainfall at station B for 1990 would then be estimated as. अब आपको यहाँ पे estimate करना है कि what would have been the annual rainfall at station B. What would have been the annual rainfall at station B? तो देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल रिक्वायर व्हाट इज दैट जो भी इनऑपरेटिव था जो भी मिसिंग था हमें उसका एनुअल में जाके 10% रेंज निकालना होगा. व्हाट इज द 10% रेंज ऑफ एनबी. ओके तो यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं 10% ऑफ 180 is equal to 18 centimeter. Okay, 18 centimeter. Now we'll calculate 10%. 180 plus minus 10%. ये कितना आएगा? 180 minus 80 and 180 plus 18. 180 minus 18, this will become 180 minus 18, 162 and this is 198. Okay. अब देखो ये आ गई रेंज फॉर n. if जितने भी n हैं वो अगर इस रेंज में फॉल करते हैं तब तो हम एस्टिमेटेड वैल्यू को या जो भी हमारा मिसिंग वैल्यू है उसको डायरेक्टली एवरेज करके निकाल सकते हैं. आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा. बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि ना तो ये इस रेंज में है ना ये इस रेंज में. देयरफॉर वी नीड टू अप्लाई द नॉर्मल रेशियो मेथड. ओके हमें क्या अप्लाई करना है? नॉर्मल रेशियो मेथड. What is that normal ratio method? PB upon NB, this is equal to 1 by 2 PA upon NA plus PB upon NB. इस एक्सप्रेशन को लगाएंगे यहां पे. यहां पे इसे लिखते हैं PB हमें निकालना है. What is NB? That is 180. This is equal to 1 by 2 into PA is 170 divided by NA, that is 160 plus PB, not PB, sorry, this is
PC divided by NC. This has to be PC divided by NC. So PC is 180 divided by NC is 200. So simple sir, इस expression को if you solve, you will get PB upon 180. Just please solve this expression. .98125. तो यहां से हमारे पास में PB का वैल्यू आ जाएगा 176.625 सेंटीमीटर. 176.625 सेंटीमीटर. So you will see the answer is, देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? Yes. So we have now here option B, 176.625. Nearest option is 176.6. ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे. तो ये these were the 5 questions, good 5 questions जो आपको मतलब आप पहले से पढ़ रखे होंगे कि तैयारी हो रखी होगी. This is what I am assuming. Okay, since जनवरी का एंड आना है तो आपकी तैयारी हो रखी होगी. I am assuming that. और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. That will be highly helpful. बहुत हेल्पफुल रहेगा. Okay, चलिए. So let me give you a very small announcement. On Monday, I am going to take the complete soil mechanics. Complete soil mechanics के 100 questions. 100 questions. Okay. Without a break, single lecture के अंदर we will be having long session. Yes, Akash. You will have direct questions also and tough questions also. My job here is to give you the entire view of GATE examination. अगर आप पूरे के पूरे GATE exam को देखोगे, so there you will find 15% tough questions. You will have 15% easy questions, and 60 to 70% will be moderate. Okay. मैं आपको extra tough question करा के I don't want to like waste time or something, because that is not the reality. Okay. 60 to 70% of the time you will get moderate level of questions only. तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं. Okay. So soil mechanics, I am going to start 100 questions which will cover your entire completely soil mechanics पूरा का पूरा cover कर लेगा. Okay. तो उस सेशन में बैठे, अगर आपने तैयारी कर रखी है soil mechanics की, तो just sit in that session, regularly पढ़ाई करते रहो, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो. You will also get the PDF beforehand. We start the session, उसके पहले आपके पास में PDF पहुंच जाएगा. You can sit in that session, PDF को ओपन करके देखें और आपने जो सॉल्व किया है उसको मेरे साथ में सॉल्व करके देखें. Okay, so this is what the plan is for our Monday. Yes, it will be at 2 p.m. This session will be at 2 p.m. Okay. Yes, Raja, we'll be covering entire subjects also. सारे subjects will try and cover. Okay. चलिए, so we'll meet tomorrow. Till then, please enjoy and keep studying hard. Till then, everyone take care. Bye bye, and keep watching YourPedia.